Hello there, welcome back to my channel. I'm Gaur from Learn English with Gaur, and today I'm going to talk about my improvement, that how I have learned English alone at home without spending a single penny. So in this video, I'm just going to talk about my improvement, my whole improvement, that how I have improved my English. So guys, I just want to tell you one thing, that I am also a learner like you. I'm not saying that I am a beginner in English, because I know about the English and I can understand English, and I could have conversations with others in English in a good way, not in a very well way, but I could have conversations with others. So that is why I can't say that I am a beginner in English. I am in an intermediate level, okay guys? So sometimes I get stuck while speaking in English, and sometimes I just want to say that sometimes I also fumble while speaking in English. So please guys, if I do these kind of mistakes in English or in this video, so please try to ignore those, because I am also a learner like you, okay guys? So now let's come on to the main point, that I have learned English alone at home. Okay, guys. So the first and the very main point, that is record yourself in English. And how could you record yourself? Now, what I want to say here, I just want to say that try to speak in English and try to record that thing, whatever you are talking in English. Okay, guys. Now, if you do not have any topic in English, like you do not know how kind of topic you should describe, or what kind of topics you should pick up for practicing, so you should simply just go on to the chat gpt and ask to chat gpt, I am trying to improve my communication skills, and I do not know what kind of topic should I learn as a beginner in English, because I am working on my communication skills. Okay, so ChatGPT would give you a lot of topics for learning as a beginner. If you're a beginner in English, so you have to say that thing to ChatGPT. Okay, guys, then you will get a lot of topics. Then, if you want that ChatGPT should describe those topics for you, so just simply ask to ChatGPT, could you describe these topics in detail? Because I do not have enough knowledge about these, and I do not have a lot of vocabulary words for describing these topics. So definitely you will get a good explanations about these topics. Okay, guys. Then if you get those topics according to your choice, then what you have to do, just try to record yourself, just try to learn those topic, read those topics as many times as you can, because by reading you will get the main points of to those topics, okay, to relate it to those topics. Okay, guys, then try to describe those topics in your own way. After reading those topics, you will get main points. Now the next thing, what you have to do, you have to make sentences at your own. Okay, try to make sentences on those topics. Firstly, just pick out any one topic. For example, you pick up one topic that is related to friendship. Okay, so now what do you have to do here? Firstly, why, just ask question to yourself, that why friendship is important in every person's life, why friends are important. This is the second question. And why we think that friends are the main part of everyone's life. So these are the three questions. Now you have to answer those questions to yourself. Okay, now when you will answer those questions to yourself, try to record those answers, sorry. Okay, try to record those answers, whatever you are giving to yourself. Okay, for example, our first question is why friendship is important. So now here you could say that friendship is important. Why? Because we could share our joys and sorrows with our friends, and if we are not comfortable with our family, so friends are those part of our life, sorry, friends are that kind of part of our life with whom we could share our every
kind of problem. Okay, guys. Now, what I want to say here, firstly, you have to pick up one topic, then try to describe that topic. If you do not have enough knowledge, just go on to the chat GPT or just get the help of Google. If you do not have enough knowledge about that topic, then when you read that topic, or when you will have a lot of knowledge or enough knowledge about that topic in your mind, which is passive in your mind, but you want to activate that knowledge in your mind, and you want to talk about the words uh, about that topic. So what do you have to do? Just try to describe yourself, sorry, just try to describe that topic in English, not yourself. If you're talking about any topic, okay, so try to describe that topic, whatever you have read before. Okay, then when you will record yourself, so try to think that where are you making mistake, where are you fumbling, and why are you fumbling, and what kind of mistakes are you making? Are you making any grammatical errors, or are you making errors which are related to the structure of sentences, like you are making wrong sentences? Or if you are making sentences, try to do self correction. Now, why I'm saying that you should do self correction, because here self correction is the main thing if you want to learn English, if you want to brush up your communication skills. So guys, if you really want to improve your English, if you really want to increase the knowledge of your English, so you have to do self correction. It's the main thing for learning every language. If you want to learn any language anyhow, so firstly you have to get to know about your mistakes, which are you making while learning, while the process of learning. Okay, you have to pick up your mistakes and try to correct them as soon as possible. Okay, guys, and this is how your English is gonna better. Now, this is the first point, that you have to record yourself. Just pick out one topic, try to describe that topic in English, try to describe that topic at your own, then record yourself, then listen to yourself, then pick up the mistakes that you are making, then try to do self corrections. So these are the four parts that you have to do at the very first point, or in the very first point. Okay, so try to describe yourself. But if you do not have any topic and you do not want to describe any topic, like you're thinking that, oh, it's a really very difficult thing for me because I am a beginner and I can't describe any topic at the very first. So now what? Now here what you can do? Just go on to the YouTube, search animated videos related to learning English. Okay, and there would be subtitles which would be given for the learners who want to learn in English. Now what you have to do, you just have to repeat those subtitles, read those subtitles, and repeat those subtitles, play the video. uh, just you can on the captions. Okay, like there would be subtitles, you have to read that. There would be a video which was playing or which is playing, then pause that, read the subtitles. Now what I want to say here, I just want to say that act like a parrot who do mimicry, who mimics everyone. क्या आपने एक पैरट देखा है कि जो हर किसी को मिमिक करता है? कुछ लोगों के घरों में ये पैरट होता है जो कि लोगों को सुन के जो लोग बात कर रहे हैं उसको रिपीट करता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। If you're watching any English video, okay, and the captions are on or subtitles are on, so what do you have to do? Just repeat those subtitles. This thing is gonna work on your pronunciation and on your structure of making sentences too. Okay, तो ये चीज़ आपकी किन दो चीज़ों पर वर्क करने वाली है? सॉरी, 3 चीज़ों पर वर्क करेगी। पहले तो हो गया कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में सुधार आएगा, और वो कैसे आएगा? जब आप वीडियो को लिसन करोगे, प्रोनाउंसिएशन का सही वे उस वीडियो में बताया गया होगा, क्योंकि
वीडियोस ऐसी होती हैं कि उसमें सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी वीडियोस में ऐसा होता है, कहीं कई बार होता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाती है किसी से, बट मेनली प्रोनाउंसिएशन सही होती है। तो क्या होगा कि आपको वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करने आ जाएंगे, आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो अच्छा हो जाएगा सबटाइटल्स को रिपीट करने से। ठीक है, तो कैप्शंस को हमेशा ऑन रखिए। अगर किसी भी वीडियो का कैप्शन ऑन नहीं है जो कि इंग्लिश में है तो उसको ऑन कर लीजिए जब आप सुन रहे हैं। ओके, पहला तो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क होगा। सेकेंडली कि आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। ओके, ज़्यादातर यही होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं अंडरस्टैंड होती। जो दूसरे एक्सेंट होते हैं, हमारे इंडियंस ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं बोलने के लिए, बट कुछ वीडियोस में ऐसा होता है या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरे एक्सेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट है, तो वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप वीडियोस को सुनते रहते हो, इंग्लिश में सुनते रहते हो, तो आपके माइंड में वो एक्सेंट एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड होने लगेगी जब आप उस चीज़ को बार बार सुनोगे। ओके, आपके माइंड को वो बार बार चीज़ सुनाई देगी, है ना, तो तब आपका माइंड उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग जाएगा और आपका माइंड उस चीज़ के साथ फ्रेंडली हो जाएगा, तो आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होने लग जाएगी। ओके गाइज, देन और किस चीज़ पर वर्क करने वाला है, आपका सेंटेंसेस को मेक करने का जो वे है। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो ना सेंटेंसेस को बनाते वक्त मिस्टेक कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। बट अगर आप वीडियोस के कैप्शंस को ऑन रखोगे, सबटाइटल्स को ध्यान से देखोगे, उनको पढ़ोगे, तो सबटाइटल्स में जो सेंटेंसेस बनाए गए होते हैं वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से ही बनाए गए होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग बोलते हैं उस स्ट्रक्चर से बनाए गए होते हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं, जो कि रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप उन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ धीरे धीरे वर्क करना शुरू कर देगी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लाना है, कि कहाँ पर कौन सा रूल लगना है, कहाँ पर कौन सा लगना है। धीरे धीरे आपका माइंड इस चीज़ पर भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि साथ साथ तो आप अपनी इंग्लिश को रिटन वे में भी सीख रहे हो और बोलकर भी सीख रहे हो। तो रिटन वे में जब सीखोगे तो आप रूल्स को भी तो लर्न करोगे ही ना, क्योंकि रूल्स भी तो ज़रूरी है। हाँ, पहले स्पीकिंग ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ को अपने माइंड में एक्टिवेट भी तो करना है, जो भी आपने वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न करे हैं, रूल्स वगैरह लर्न करे हैं बेसिक पॉइंट पे। बट धीरे धीरे जब आप लर्न करते जाओगे, जब आप इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल पर चले जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सेंटेंसेस को ऐसे बनाना चाहिए था तब मुझे, है ना गाइज। तो जब आप वीडियोस को सुनोगे, उनके वीडियो में जो सबटाइटल्स ऑन किए हैं उनके स्ट्रक्चर को देखोगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको नए नए सेंटेंसेस स्ट्रक्चर भी पता चलने शुरू हो जाएंगे और आप सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से मेक करना भी शुरू कर दोगे, बनाना भी शुरू कर दोगे। ओके गाइज, तो ऐसे ऐसे करके ये चीज़ आपके मतलब इंग्लिश पर वर्क करने वाली है अगर आप अपने एफर्ट्स को पुट करते हो। ओके गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यही एंड अप करने वाली हूँ। और अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे पॉइंट्स भी बताऊँगी जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो घर रहकर। ठीक है गाइज, एंड थैंक you guys, and that's all for today. And guys, I'm making videos काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी and share my videos if you think that yes, these videos are really helpful for the learners who are learning English. Okay, so guys, please share it with others, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इंग्लिश को लर्न कर सकें बिना कोई पैसे वेस्ट करें। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।